Our topic is area and perimeter of plane figures. Under this, first one is area of triangles. Hello students, today we are going to start our next chapter, area and perimeter of plane figures. Before starting this chapter, first of all let us know what is perimeter and what is area. Perimeter. Perimeter of a plane figure is the length of its boundary. For example, let us suppose this is a rectangle. Then perimeter of this plane figure rectangle. Plane figure, 2D figure. Triangle, square, rectangle. These are the plane figures. And if you wanna compare these plane figures with the solid figures, then plane figure rectangle. When we consider this rectangle into solid shape, then this rectangle will become cuboid. Square will become cube. ठीक, 2D images हैं हमारे पास rectangle और 3D में cuboid. 2D में square, 3D में cube. ठीक है. Perimeter of a plane figure. Perimeter की बात कर रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास? In short अगर बताना पड़े, what is perimeter? Perimeter is the sum of all the sides. ठीक, perimeter is the length of its boundary. If we wanna consider the perimeter of this rectangle, then perimeter is the length of its boundary. And what would be the unit of perimeter? Let us suppose the length of rectangle is a centimeter. Unit of perimeter is same as the unit of length, either in centimeter or in meter, etc. Now come to the area. Area of a plane figure is the measure of the surface enclosed by its boundary. ठीक, let us suppose this is my plane figure, rectangle. Now what is the area? If this is the plane figure, rectangle, then area of plane figure is the measure of surface, this one, measure of surface enclosed by the boundary. ठीक, this is the area. Area of plane figure is the measure of surface enclosed by its boundary. हमने बात की थी कि ये जो बाउंड्री है, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स वो बन जाएगा पेरीमीटर. अब इस बाउंड्री के अंदर जितना एरिया है, जितनी जगह उसने कंटेन करके रखी है, दैट इज द एरिया. अगर हम कहते हैं कि पेरीमीटर के यूनिट्स लेंथ की यूनिट्स के सेम है, तो एरिया के यूनिट्स क्या होंगे? स्क्वायर ऑफ दैट यूनिट्स. स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर. ठीक, ये चीज ये है हमारे पास पेरीमीटर एंड एरिया. बिकॉज बेटा हमने डील करना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, सो अंडर दिस वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ triangles. See, we are having a triangle ABC with BC as the base. From A, perpendicular D is drawn on this base. This is known as height. And the formula to calculate area of triangle. In this case, this triangle is ABC. That's why I have written ABC. Otherwise, you can just write area of triangle is half of base into corresponding height or altitude. That's your choice. Area of triangle is always equals to half of base into corresponding height. Now what does this corresponding height means? Corresponding height is the perpendicular drawn from the opposite vertex on the base. This is better corresponding height. ठीक, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट या फिर अल्टीट्यूड, जो आपको ठीक नेम आपने देना है, यू कैन डू. ठीक, नाउ कम टू दिस ट्रायंगल एबीसी. इन दिस केस बेस इज द बीसी एंड परपेंडिकुलर इज एडी. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ऑफ बेस बीसी इनटू हाइट एडी. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया. अगर आपको बेस दिया है, हाइट दी है, देन यू कैन कैलकुलेट एरिया. हो सकता है आपको एरिया दिया हो, बेस दिया हो, यू कैन कैलकुलेट हाइट. एरिया हो सकता है गिवन, हाइट हो सकता है, यू कैन कैलकुलेट बेस. ठीक, come to the next one. One more formula is there to calculate the area of triangle. This is Heron's formula.
Let us suppose of this triangle ABC, I am having three sides ABC. In the case of Heron's formula, if A, B, C are the sides of the triangle, then we know by the definition of perimeter this is sum of all the sides. Then its perimeter 2 times of S. This is the notation we are using for the perimeter. Then its perimeter is equals to A plus B plus C, and semi-perimeter S is equals to A plus B plus C divided by 2. Now according to this formula, area of triangle is equals to under the root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Let us suppose I am having the value of ABC as 3, 4, 5. Let us suppose this is the value of A, B and C. If it is so, then semi-perimeter can be calculated 3 plus 4 plus 5 divided by 2. 3 plus 4, 7, 5, 12, 12 by 2, 6. So semi-perimeter is 6 in this case. Now, area of triangle having sides 3, 4, 5. We can calculate this by using Heron's formula, which is S, 6, then 6 minus 3, 6 minus 4 and 6 minus 5 under the root of 6, 6 minus 3, 3, 6 minus 4, 2 and 6 minus 5, 1. 3 into 2, 6. 6 into 6 and square root. So we are getting area of triangle is equals to 6. And बेटा अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेमी पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होगा और एरिया होगा स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक. सो हमने किया कि हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है then we can calculate the formula of that triangle, which is equals to half of base into height. And by using Heron's formula, we can get the value of semi-perimeter, which is A plus B plus C by 2, where A, B, C are the sides of the triangle. So, the area of triangle is under root of S into S minus A into S minus B into S minus C. This is the way to calculate area by using Heron's formula. Now come to the next one, some special types of triangles. So in this chapter we are going to deal with 3 types of triangles: equilateral, isosceles and right angled triangle. Equilateral triangle. We all know that the equilateral triangle is a triangle in which all the sides are of same length. All the sides are equal. ठीक, ये है हमारे पास equilateral triangle. Now, formula to calculate area of equilateral triangle. Let us suppose the length of each side be A unit. Then perimeter is sum of all the sides. That means A plus A plus A gives you 3A. This is the formula to calculate perimeter of an equilateral triangle. And formula of area is under root 3 by 4 times of A square. Under root 3 by 4 times of side square. अगर साइड A है तो वो बन जाएगा A square. ठीक. Come to the next one. This is equilateral triangle. Next is isosceles triangle. Isosceles triangle in which only 2 sides are equal. Let us suppose this is my triangle and these 2 sides are equal. Then this triangle ABC is an isosceles triangle. Let the length of each equal side be A and the length of this base BC be B. Then the formula to calculate area of an isosceles triangle is 1 by 4 times B into under the root of 4A square minus B square. Come to the third one. When we are talking about right angled triangle. Right angled triangle. This is right angled triangle. This is height. This is base. So area of a right angle triangle is half of base into height. ये हुआ हमारे पास इक्वेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला.
ठीक, अब you have to learn this formula that area of equilateral triangle is under root 3 by 4 times of a square. Area of an isosceles triangle is 1 by 4 times of length of the base into under the root of 4a square minus b square, और राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. ठीक, बट अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर फाइंड आउट करना पड़े और आपको भूल गया हो कि एरिया फाइंड आउट कैसे करना है, फॉर्मूला भूल गया, ठीक है, यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज करेंगे. अगर ये फॉर्मूला बाई चांस भूल जाए कि एरिया इज इक्वल टू 1 by 4 times b into under root of 4a square minus b square, in that case आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मेरे पास ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, तो वर्टेक्स A से अगर मैं BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अगर मैं वर्टेक्स जो है मेरे पास A उससे ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं, तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. आपको ये गिवन है, ये साइड लेटर सपोज गिवन है, आपको बेस की एक साइड उन्होंने दे दी कि BD की वैल्यू दी है, देन यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ AD. ठीक है, तो BD अगर दिया है, BC उसका ट्वाइस होगा, AD आ गया, बेस आ गया, हाइट आ गई 1 by 4 टाइम्स ऑफ बेस, 1 by 2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट से एरिया आ जाएगा. नहीं इस तरह से फाइंड आउट करना, अगर आपके पास ये दो साइड्स हैं, आपको हाइट की मेजरमेंट गिवन है, ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से BD फाइंड आउट कर लोगे. BC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BD, BC हो गया ट्वाइस ऑफ BD. ठीक, तो हमारे पास BC भी आ जाएगा. अब तीनों साइड्स आ गई, तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला किया, वो कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर द रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. चॉइस इज योर्स. अब आपकी मर्जी, आपने कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए. तो जो हमने करने थे, हमारे पास थे 3 ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल. एरिया क्या है इक्विलेटरल का, अंडर रूट 3 by 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर. आइसोसेलेस ट्रायंगल का है 1 by 4 टाइम्स ऑफ B इंटू अंडर द रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. अब B क्या है, जो बेस है हमारे पास, और A है जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. This is the way to calculate area of these triangles. Come to the question. We are having isosceles triangle. We have to find out the area of an isosceles triangle whose sides are given to us. One side is of 5 centimeter and base is 6 centimeter, but it is also given to us that equal length of one equal side. Let us suppose I am having a triangle ABC. This is an isosceles triangle in which AB is equals to AC, 5 centimeter, 5 centimeter, and base is 6 centimeter. So, let us find out the area of an isosceles triangle. We can find out the area by using different methods. Come to the first method. In this method, we are going to use the property of an isosceles triangle, and that property says if we draw a perpendicular from the opposite vertex to the base, then this perpendicular bisects the base. It is given to us that base is of 6 centimeter, and if base is of 6 centimeter, वो उसको bisect कर रहा है, then ये भी 3 centimeter हो गया, ये भी 3 centimeter. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है, बिकॉज हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया. फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं यूज, कि अगर आपको नहीं फॉर्मूला भूल गया, ठीक है, देन वी कैन गो अहेड विद दिस वन. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB, मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ADB. ठीक, उसमें मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे हाइपोटेन्यूज AB गिवन है, बिकॉज परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है. एंड वी ऑल नो दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर
This is by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. ठीक. Now the value of AB is 5. The value of AB is 5 centimeters. Square of 5, 25. 25. Value of AD हमें नहीं पता, हमने फाइंड आउट करनी है. एंड वैल्यू ऑफ BD इज 3. स्क्वायर ऑफ 3, 9. 9 ने जब अपनी साइड चेंज की फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो वो क्या बन जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, और 16 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर. स्क्वायर हटा के वो बन गया स्क्वायर रूट. मतलब AD की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें आता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. बेस गिवन था BC 6 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड आउट कर ली. 2 3 द 6, 3 4 द 12. अब सेंटीमीटर था यूनिट्स, तो एरिया के यूनिट्स उसके स्क्वायर होंगे. दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which the length of equal sides is equals to 5 centimeter and the length of base is 6 centimeter. Come to the second method. See, हमारे पास एक Heron's formula है जो कहता है अगर तीनों sides given है हमें, अगर तीनों sides given है 5 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, then we are able to calculate the area. For that, first of all we need to find out the semi-perimeter, which is 5 plus 5 plus 6 by 2. 10 plus 6, 16 by 2, 8 centimeter. This is the value of S. And according to Heron's formula, the area should be S, S minus A, S minus B, S minus C. Or we can say 8, 8 minus 5, 8 minus 5, 8 minus 6, which is again equals to 8. 8 minus 5, 3. 8 minus 5, 3. 8 minus 6, 2. 3. 8 to the 16. Square root of 16, 4. 3 into 4, 12 square centimeter. See, यहाँ पे भी एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर था, इधर भी एरिया कितना आया है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. पर इन दोनों जगह पे हमने फॉर्मूला डिफरेंट यूज किया है. ठीक है. अब आते हैं जो हमने फॉर्मूला मेन किया था, जो हमारा थर्ड मेथड है कि कैसे फाइंड आउट करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला. ठीक है. अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में फाइंड आउट करना है, हमें इक्वल साइड्स की लेंथ देगी. इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, और बेस की लेंथ कितनी है, 6. तो एरिया क्या बनता है, 1/4 टाइम्स द लेंथ ऑफ दैट बी. ठीक है. बेस इंटू अंडर द रूट ऑफ 4, यहाँ पे जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर, इंटू माइनस जो मेरे पास डिफरेंट है साइड उसका स्क्वायर. ये हो गया 6/4. 2 2 the 4, 2 3 the 6, 3/2 under the root of 5 5 the 25. 25 into 4, 100. 6 6 the 36. 100 minus 6, 36. This is 64 and square root of 64 is 8. ठीक. 2 2 the 4, 2 3 the 6, ये बन गया 3/2. इधर आ गया ये 2 4 the 8. Now 3 into 4, 12 square centimeter. See, in all the three methods the area of triangle is same. So beta choice is yours. ठीक है. आपको कैसे यूज करना है, कैसे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज योर चॉइस. ठीक. आपने देखना है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यू कैन गो विद दैट थिंग. अगर आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, यू कैन यूज दैट वन. और अगर आपको पर्टिकुलर ट्रायंगल्स के फॉर्मूला आते हैं, then go ahead with that. So this is all for today's lecture. Thank you.